Hi all of you. So let's continue with solid state. In last lecture we have done with what we have done, calculation of number of atoms present in each unit cell of cube. We have also done the detailed classification of structure of crystal. We have done 7 basic crystals system. Then we have also done the Bravais lattice system 14. ब्रेवियस ने 7 को फर्दर क्या किया था 14 में डिवाइड किया था. We have done that. So now let's continue with relation between radius and edge length. Okay, so first we'll find the relation between r and edge length of simple cube. Now you can see here on your screen सपोज मेरे पास में सिंपल क्यूब है. अब इस सिंपल क्यूब में कैसा होता है, atoms are present on every corner. Atoms are present on every corners. So ये एक फेस है, ये this is one face. ठीक है. Now in this face on every corner atom is present. So this is the face. ये क्या है, वो face है. And on every corner atom is present. एटम कैसा होता है, एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं ना. एटम्स इन सिंपल क्यूब, एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर. एटम्स कैसे होते हैं, एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं. करेक्ट ना, एटम्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. सो ये जो है वो एज लेंथ है. दिस इज ए, दिस इज ए, edge length A, and this is R, that is the radius of atom. R is the radius of atom. So A is equal to 2R. Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, R is equal to A by 2. R is equal to A by 2. Next we will find out the relation between R and A for body centered cube. For body centered cube. अब body centered cube कैसा होता है, atom is present on every corner. Atom कहाँ पे present है, it is present on every corner. And in the center of body. So you can see here atom is present on every corner and in the center of body. तो ये जो atom है means corner का जो atom है it is connected with body centered का atom है ना. body center के atom से कैसे है, इन लोग bonded है. corner के atoms bonded नहीं है. you can see here bonded जो कॉर्नर के एटम्स है दे आर नॉट बॉन्डेड. कॉर्नर एटम्स आर नॉट बॉन्डेड बट दे आर बॉन्डेड टू सेंटर्ड बॉडी एटम. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे एक डायगोनल बनाती हूँ ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक, इसको मैं नेम दे देती हूँ ए बी. So if I name this as A and B, तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे एटम है, इसके कॉर्नर पे एक एटम है एंड एक एटम जो है वो कंप्लीट है. दिस एटम इज
कंप्लीट, मेरा वो एटम ऐसा थोड़ा सर्कुलर नहीं आया है, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो एटम जो है वो स्पेरिकली होता है। अभी मेरा जो ड्राइंग है वो थोड़ा, हाँ अभी देखो, दिस इज परफेक्ट ना। हाँ, तो ये जो है सेंटर एटम जो है वो कंप्लीटली आता है, और ये कॉर्नर्स के ऐसे हाफ हाफ आते हैं। यू कैन सी हियर ऑल्सो इन दिस फोटो, दिस इज कमिंग कंप्लीट एंड दिस इज नॉट कमिंग कंप्लीट, इट इज कमिंग ओनली हाफ। तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, एंड ये पूरा है ना, तो इट विल बी 2r। सो मैं क्या लिखूंगी, ए बी दैट इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल, and that is equal to 4r. Yes. Now what is the formula of body diagonal? बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, सो इट इज इक्वल टू, क्यूब है, सो सब साइड्स क्या होती है, सेम होती है, सो दिस विल बिकम a square plus a square plus a square. So that is equal to root of 3a square. So it is a root 3. So this is first and this is second. This is also body diagonal in terms of r, and this is body diagonal in terms of a. So 4r is equal to a root 3. So r is equal to a root 3 by 4. R is equal to a root 3 by 4. And keep this in your mind, you have to learn this relations. इसके ऊपर CET में, बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. So you have to learn this formula. You will write down this formula 5 times as a homework. This formula 5 times as a homework. अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, दैट इज फॉर फेस सेंटर्ड क्यूब. नाउ फॉर फेस सेंटर्ड क्यूब कैसा होगा, क्यूब is present and atoms are present on every corners and in the center of every face. Correct? Atom is present on the corners and on the center of face. So अगर मैं एक फेस कंसीडर करती हूं, तो इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, ये कॉर्नर पे और ये कॉर्नर पे, एंड इन द सेंटर ऑल्सो देयर इज वन एटम. नाउ मैं क्या करती हूं, I'll draw the face diagonal AB. तो ये जो AB है, now on AB again you can find atom in this way. This is R, this is 2R and this is R. So AB that is equal to face diagonal, and that is equal to 4R. Okay. Now by applying Pythagoras theorem ABC in triangle ABC, by Pythagoras theorem, AB square that is equal to AC square plus BC square. ओके, नाउ AC अगर मैं देखूंगी तो ये एक एज है ना क्यूब का, तो इसको मैं A बोलती हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो एज, सो दिस इज ऑल्सो A, सो दिस इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. सो AB is equal to root of 2A square. So I can write it as A root 2
Yes, all of you. So this is equation 1 and this is 2. So AB. So मैं ऐसे लिखूंगी 4r is equal to a root 2. So r is equal to a root 2 by 4. You will write down this formula 5 times in your homework. Clear, all of you? Okay. Now our next topic is packing efficiency. So packing efficiency अपने को क्या बताता है? What percent atoms are present in a unit cell? What is the percent of atom present in a unit cell is given by packing efficiency. So what will be the formula? Packing efficiency is denoted by nu. Nu is equal to Z into volume of sphere upon volume of cube. Sphere यानी atom का volume. Atom is spherical in nature. So here Z is what? Number of atoms in unit cell of cube. Volume of atom is equal to 4 by 3 pi r cube and volume of cube that is equal to a cube. Okay. So first we'll do it for simple cube. Packing efficiency for simple cube. So formula लिख लेते हैं पहले Z into volume of sphere upon volume of cube. So for simple cube, one atom is present. Volume of sphere is what? 4 by 3 pi r cube upon volume of cube is a cube. Okay. Now relation between r and a is r is equal to a by 2 for simple cube. अभी हम लोग ने just derive किया है relation. Now I'll substitute this value here. So मुझे क्या मिलेगा? 1 into 4 by 3 pi into a cube upon 2 into 2 into 2 into a cube. A cube cancel. This will get cancelled out. So it will become pi by 6. Now all of you do the calculation. Pi by 6 यानी कितना होता है? What is the pi by 6? It is coming 0.5236. 0.5236. Okay. If they are asking me is the percent efficiency, so it will be 0.5236 into 100. So it is 52.36%. So 52.36% जो है वो फील्ड है क्यूब के अंदर, एटम्स का फील्ड है. देन व्हाट इज द परसेंट वॉइड? खाली जगह कितना है? 100 minus 52.36. So it will come around 47.64%. Okay. Now similarly we'll calculate for body centered cube. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज Z इंटू 4 by 3 pi r cube upon a cube. So Z is 2,
What is the relation between R and A? R is equal to A root 3 by 4. So we'll substitute this value over here. So it will become 2 into 4 by 3 pi R cube means A cube 3 root 3 A cube cancel, 4 cancel, 3 cancel, 2 1 ja, 2 2 ja. So this will become how much? Pi into root 3 upon 8. So इसको pi into 1.73 upon 8. So all of you do this calculations fast. कितना आंसर आ रहा है? It is coming 0.68. 0.68. अगर परसेंट एफिशिएंसी पूछा तो 0.68 into 100 that is 68%. और परसेंट वॉइड खाली कितना है? फील्ड है 68% बॉडी सेंटर्ड क्यूब. एंड व्हाट इज द एम्प्टी स्पेस? That is 100 minus 68, that is 72%. Clear, all of you? Now similarly, we'll do it for face-centered cube. Face-centered cube. Formula लिख लेते हैं Z into volume of sphere upon volume of cube. Z, that is 4 into 4 by 3 pi r cube upon a cube. What is the relation between R and A? R is equal to A root 2 by 4. So we'll substitute this value. So it will become 4 into 4 by 3 pi into A cube 2 root 2. 4 into 4 into 4 into A cube. A cube cancel. 4 cancel. 2 1 ja, 2 2 ja. So it will become pi root 2 by 6. Now root 2 यानी 1.42 upon 6. इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर? इट इज कमिंग 0.74. 0.74. नाउ सपोज परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी पूछा तो मैं क्या करूंगी? इसको मल्टीप्लाई बाय 100. सो इट विल बिकम 74%. परसेंट वॉइड, ये 74% इज द फील्ड स्पेस. खाली जगह कितना है? 100 minus 74, that is 26%. So on this topic, many questions are asked in form of MCQ in MHCT. And also this question comes in boards. Derive the packing efficiency of FCC or BCC or SC. ठीक है, 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए ये डेरिवेशन कैलकुलेशन पूछते हैं. सो प्रैक्टिस दिस डेरिवेशन 2 times. It's your homework. You have to write 2 times the derivation of simple cube, body centered cube and face centered cube. And you have to make proper notes of these topics which I have taken today in this video. And those who will not do homework, I am not going to allow you for lecture. So जो भी होमवर्क दिया है उसको प्रॉपरली करके ही लेक्चर में आना. ठीक है, so I'll stop here in this video and in next lecture हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, boards based numericals on the topics we have done so far.
Clear, all of you? Okay. So meet you in next lecture. Till then, bye bye. Take care.